हम सबके साथ ये चीज़ कभी ना कभी होती है कि वी गेट सो लॉस्ट इन डूइंग समथिंग एंड हमें पता ही नहीं चल जाता कि नेक्स्ट 2 आवर्स 3 आवर्स मे बी 4 आवर्स कैसे चले जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने ये चीज़ को फ्लो स्टेट नाम का टर्म दिया है एंड विच जस्ट मीन्स कि वी गेट लॉस्ट इन टू डूइंग समथिंग एंड इट जस्ट सीम्स लाइक द मोस्ट नेचुरल थिंग टू डू। एंड मज़े की बात यह है कि we can actually unlock this on command, which means that there are a certain things that you and me we all can do just say we just get into flow state effortlessly. So think about it, कितना advantages है। what you are doing just feels like the most natural thing, यानी कि आप जो भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो, आप जिम में हो या फिर यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर दैट मैटर, आप जो भी कर रहे हो जस्ट फील्स नेचुरल एंड जस्ट फील्स एफर्टलेस एंड टाइम जो है वो और जल्दी निकल जाता है। सो नाउ दैट यू नो कि फ्लो स्टेट एग्जैक्टली क्या होता है एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू एक्शनेबल स्टेप्स जो मैं खुद करता हूँ पढ़ाई करते वक्त, जिससे इट जस्ट बिकम्स ईजियर टू नॉक इन। एंड सबसे पहली चीज़ दैट यू नीड टू डू इज एंड विच इज़ अ नो ब्रेनर एक्चुअली इज सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो। Studies show that whenever you are approaching flow state and you get distracted, तो फिर it takes the brain about 15 to 20 minutes, yes 15 से 20 मिनट लगते हैं to kick back into optimal flow state. So why would you waste an opportunity to do something that you really really love just because आपको कोई फ़ोन कॉल या फिर आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाता है? Do yourself a favor, सारे जितने भी distractions है, your phone being the main one, वो सब बस दूर हटा दो। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है टू गेट इनटू फ्लो स्टेट इज जस्ट गिव इनफ टाइम। एंड फ्लो स्टेट इजंट समथिंग दैट वी जस्ट किक इनटू फ्लो स्टेट लाइक 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स। स्टडीज शो दैट इट टेक्स अबाउट 15 to 25 मिनट्स टू किक इनटू फ्लो स्टेट, यानी कि आपकी जो पीक ऑप्टिमल एफिशिएंसी होती है, पीक ऑप्टिमल फोकस होता है, वो पहुंचने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 मिनट देने पड़ेंगे। गेट इनटू फ्लो स्टेट प्रॉपर्ली, व्हाट यू नीड टू डू इज पूरे दिन में से आपको जस्ट टू बिगिन विद जस्ट 1 hour ऑफ योर टाइम, just take it out जहाँ पे you know कि nobody is going to call you, nobody is going to text you, and if people are going to call you and text you तो फिर just keep your phone on airplane mode, जैसे मैंने अभी किया है। my phone जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ is on airplane mode because for the next about 15-20 minutes मुझे कोई भी distractions नहीं चाहिए। So the third thing that you need to do to kick into flow state is choose something that is a little bit challenging, क्योंकि ये सोचो कि when it is too easy तो फिर आप बस एक 5-10 मिनट्स में बोर हो जाओगे, and when something is too difficult तो फिर it is just too difficult, आप एक 2 मिनट में क्विट कर जाओगे। तो what you need to do is find the sweet balance between something जो बहुत ही easy है versus something that is too difficult. You need to find a sweet spot जहाँ पे आप जितना effort डाल रहे हो that is not too easy, not too difficult, but it is just slightly difficult. It is sort of like progressive overload for your brain. It is slightly difficult than what you could handle. Now that you know how to get into flow state, there are a few barriers that you should completely avoid if you want to get into flow state. And the first thing is multitasking यानी कि not being mindful towards what you are doing. Being mindful is important, वो मैं एक analogy से explain करता हूँ। And it is कि ये सोचो कि मेरे पास ये एक water bottle है and I have about 10 plants to water, and if I just give थोड़ा 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 पानी to each of those plants तो फिर सारे के सारे plants मर जाएंगे क्योंकि they have not gotten enough water। versus ये सोचो कि I just focus ये जितना पानी है just on 2 plants तो फिर they'll just grow to be like the best plants that they could be. So lesson being, do not multitask while getting into flow state. Just focus on that one task that you need to get done. दूसरी चीज़ that is a barrier, that is an obvious, that is distraction. So ये बेहतर explain करने के लिए I'll give you an example. मेरा जो phone है that I am using to film this video, and ये सोचो कि every 1 minute अगर मुझे कोई एक नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता तो फिर मेरा ध्यान वहाँ जाएगा। आई विल रीड किसने मैसेज भेजा है, मैसेज क्या है, व्हाट डू आई नीड टू डू। अगर वो मैंने मैसेज पढ़ा है, फॉर एग्जांपल समवन से इसकी असाइनमेंट सबमिशन कल या परसों है, मेरा ध्यान उधर चले जाएगा, मेरा ध्यान वोंट बी टुवर्ड्स फिल्मिंग दिस वीडियो। सो व्हाट आई हैव डन टू काउंटर दैट इज पुट माई फोन ऑन एयरप्लेन मोड। सारे के सारे जितने भी मैसेजेस आ रहे, कॉल्स आ रहे, ईमेल्स आ रहे, वो आई कैन अटेंड एट अ लेटर टाइम। सो एक छोटा सा एक्शनेबल आइटम टू रिमूव ऑल ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस इज पढ़ाई करते वक्त या फिर जिम में या फिर लाइक वेन एवर दैट यू वॉन्ट टू किक इन टू फ्लो स्टेट, just
just keep your phone in a separate room, या फिर just if you are using your phone तो फिर just keep it on app. अगर आपको flow state में kick in करना है तो फिर हमेशा तीन चीज़ें याद रखना. सबसे पहली चीज़ is कि do less, do not take up a lot of things on your plate. The second thing is work at a natural pace, and the third thing is quality over quantity. These were some of the things that I have learned over time that have helped me study. And बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है when you are studying. There are no distractions and you just forget that you are studying. Like it just becomes more effortless. versus ये सोचो कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, आपको कोई कॉल कर रहा है, आपको कोई टेक्स्ट कर रहा है, देर आर लाइक फ्यू थिंग्स लाइक स्ट्रेसिंग यू आउट इन योर माइंड. तो फिर आई होप कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लाइक ऐसे लाइक पीपल हु आर लाइक वाचिंग हु आर नॉट स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो है हेल्प्स यू गेट इनटू फ्लो स्टेट. एंड अगर ये वीडियो से अगर कोई भी मदद मिली हो, कोई भी हेल्प मिली हो, कोई भी वैल्यू मिली हो, तो फिर इसे प्लीज़ दो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, नॉट जस्ट वन. लाइक जस्ट शेयर दिस विथ लाइक टू ऑफ योर फ्रेंड्स. And also subscribe kar do and just leave a comment for me, and yeah, I'll see you guys in the next one.